Good morning, students. Today we are going to continue chapter 3, computer memory and storage devices. In previous class we have studied that computer memory is a storage space where all the data that is to be processed and the instruction required to process that data are stored. Okay, and we have also studied that megabytes, it is the measuring unit for the capacity of memory, and memory, it is of two type, primary memory and secondary memory. In today's class we will study about primary memory. Okay, so let's start today's class. Primary memory, internal or main memory. So primary memory is also known as the main memory or internal memory. It is volatile, which means that the data stored gets lost as soon as the power is turned off. It has a limited capacity. The data stored in it is temporary. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है बेटा? प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. ये वॉलेटाइल नेचर की होती है. वॉलेटाइल का मतलब जैसे ही आप पावर यानी कि पावर ऑफ कर दोगे, यानी कि स्विच ऑफ कर दोगे कंप्यूटर को, तो जो भी डेटा आपने स्टोर किया है, ठीक है, वो सारा गायब हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है. ये अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड होती है. और जो भी डेटा यहाँ स्टोर होता है वो टेम्प्रेरी होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए होता है. टेम्प्रेरी का मतलब जो कुछ टाइम के लिए हो. ठीक है. तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है. उसमें आता है रैम और फिर रोम. सो let's study what is RAM. So you have to pronounce it RAM, not RAM. It is RAM. The full form of this is random access memory. RAM is the working memory of a computer system. It is attached to slots on the motherboard. When we work on a computer, the software we use is loaded temporarily onto the RAM from a permanent storage device such as an hard disk. Okay, so what is the full form of RAM? Random access memory. So it is the working memory of the system, of the computer system. Okay, RAM, this is attached to the slot on a motherboard. So what is a motherboard? Motherboard, it is a single platform to connect all parts of a computer together. That is the motherboard. Okay, and in that motherboard there is a slot is a it is a place where you put this RAM. Okay, so you put it into a space, you put RAM into a space where it fits. Okay, so slot is a place where the RAM can easily fit. There is a slot on the motherboard. Okay, so there is a place in that motherboard where you can fit that RAM. This is the picture of RAM. Whenever you work on a computer, the software that we use. Okay, what is the meaning of software? Software is the program, or program means it is a set of instruction that tells the computer what to do. So when we work on a computer, the software we use is loaded temporarily on the RAM from a permanent storage device. So from any permanent storage device like hard disk, the software that we want to use, it is temporarily loaded in RAM. Okay, what is hard disk? Hard disk, it is an electromagnetic data storage device. It is an electromagnetic data storage device. Okay, when we turn off the computer, the RAM loses all the software and data. So if we turn off the computer, okay, so everything that is uploaded or stored in this RAM, it get lost. Okay, that means it get deleted or it get vanished. So before switching off the computer, the data has to be saved onto a permanent storage device. This is why RAM is called a temporary memory or volatile memory. So before turning off the computer or before switching off the system or computer, you need to save that data or the document onto a permanent storage device. Okay, only then it will remain safe.
otherwise it will get deleted. Because of this reason, RAM is called temporary memory or volatile memory. Why? Because the data stored get lost whenever the power is turned off if it is not saved. Each time we switch on the computer, the saved data and the software are reloaded on the RAM. Since RAM is the place where all the work is done, data can be read and written in RAM. So RAM is also known as read-write memory. So RAM is a place where all the work is done. Okay, so you can so all the work is done on RAM. It is a place where all the work is done. So we can read it, we can write it, okay, we can make changes to it. That's why we also call it read and write memory. RAM, okay, so if the data that we have written, it is saved, then that saved data or software, it will be reloaded when the power is switched on. सो रैम का क्या मतलब होता है बेटा? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसको रैम पढ़ना है, राम नहीं पढ़ना है, ठीक है. रैम जो है वो वर्किंग मेमोरी होती है एक सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है. हम यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सब कुछ रैम में हम कर सकते हैं, इसलिए हम इसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं. जो हमारा मदरबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसमें एक प्लेस होता है जहाँ पे ये अटैच किया जाता है. स्लॉट का मतलब एक होल जैसा ले लो जहाँ पे इस रैम को हम फिक्स कर सकते हैं मदरबोर्ड के अंदर. तो ये आप रैम की जो है पिक्चर देख रहे हो. मदरबोर्ड क्या होता है बेटा? मदरबोर्ड एक ना ग्रीन कलर टाइप का बोर्ड होता है, ग्रीन होता है मीन्स वो, ठीक है, दिखने में. उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स जो है होते हैं उस सिंगल प्लेटफॉर्म पे, और वो एक साथ सभी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो होता है हमारा मदरबोर्ड. तो मदरबोर्ड पे एक स्लॉट यानी कि एक होल जैसा होता है जहाँ पे ये फिक्स हो सकता है, ठीक है, रैम. तो ये रैम की आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है. तो रैम क्या होता है बेटा? रैम जो है ना, वहाँ पे टेम्पररी चीज़ें स्टोर होती है. तो जैसे ही आप जो है सॉफ्टवेयर जो है, जैसे ही आप ऑन करोगे ना कंप्यूटर को, वैसे ही जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो लोड हो जाएगा टेम्पररी रैम के ऊपर. कहाँ से लोड होगा? हार्ड डिस्क से, जो कि एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है. तो जो भी डाटा हम फीड करवाएंगे ना, फीड का मतलब देंगे, जब हम काम कर रहे हैं जो भी हम डेटा देंगे, जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब डेटा होता है. तो जो भी हम काम करते टाइम डेटा देते हैं वो टेम्परली का मतलब कुछ टाइम के लिए रैम पे स्टोर हो जाएगा, ओके, ठीक है. तो जो डेटा है जो हम देते हैं, फीड का मतलब देते हैं, जैसे काम करते टाइम, जैसे कि हम मान लो कि एक फाइल बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है. तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम कुछ नंबर्स को देंगे ना कंप्यूटर में पहले, फिर उसका रिजल्ट वगैरह आएगा. तो जो भी डाटा हम देते हैं काम करते टाइम, वो टेम्परली कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है. और जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जैसे हम ऑफ कर देते हैं, टर्न ऑफ, तो जो भी रैम में डेटा हमने दिया है या सॉफ्टवेयर है या डेटा है, वो सब जो है डिलीट या लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए कहते हैं कि स्विच ऑफ करने से पहले जो भी आपका डेटा है, जो भी आप फाइल बना रहे हो, मान लो आपने कुछ टाइप किया है कंप्यूटर में, तो उन सबको जो है सेव करना है, ठीक है. किस में सेव करना है? एक स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के अंदर, क्योंकि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है इसकी. जैसे स्विच ऑफ करोगे वो सब डिलीट हो जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया. इसलिए रैम को हम टेम्पररी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हर बार जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो सिर्फ स्विच ऑन करते हैं, तो जो हमने सेव किया है ना डेटा या सॉफ्टवेयर, वही रीलोड होता है रैम के ऊपर, ठीक है. तो सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. तो रैम जो है, रैम वो जगह है जहाँ पे हम सारा काम करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन या जो भी, मीन सब कुछ इसी में जो है टेम्परली यहाँ पे स्टोर होता है जो भी डेटा या सॉफ्टवेयर है. तो हम डेटा को जो है रैम में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसलिए रैम को जो है रीड एंड राइट मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये आपको याद करना है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि रैम को रीड और राइट मेमोरी बोला जाता है. रैम जो है वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है,
ठीक है, यानी कि वॉलेटाइल होता है, इसलिए इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. सो today we are only going to do up to this. In next class we will study read only memory room. Okay, so read this topic at least 2 times. So thank you so much. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.